Chapter number six, throughout, it's really a long chapter, but I'm only going to take you to the important part of this, or the one which is mostly asked into your exam. So I'm just going to give you the concept, and later on, it has the same things over and over again. So chapter number six is basically about automated systems and emerging technologies. So first of all, I'm going to discuss with you that what is an automated systems. So all those systems that do not need human intervention when they are working. So these systems are known as automated. Uh, and emerging technologies are those which are emerging, or like they are expected to bring a change into the world in the coming years. So emerging technologies are those that are not yet currently developed, but they are in their development phase. So for example, if it's a robot that is welding cars in a factories, or maybe a grass cutter or a smart road sign, so you can see them all around them. That includes your or automated system. So they are being, increasingly popular, and this will also give you some examples of the AI as well. So what is the basic concept or the basic definition of an automated system? So is first of all, it is basically a combination of software and hardware. So if into your exam you are asked that what is an automated system, so you can reply to that this is basically a combination of software and hardware. Software and hardware, for example, it has sensors, it has microprocessors, and it has actuators that is designed and programmed to work without the need for human intervention. That means that an automated system is basically a combination of your software and hardware, and it has three basic components. One is sensor, second is microprocessor, third is actuator, and that is designed and programmed to work without human intervention. That means that humans do not need to involve into that. It might be needing some sort of human monitoring, but they are not based on human tasks. So in this automated systems, I have three areas. The first is known as sensors, the second is known as a microprocessor, and the third is known as an actuator. So first of all, I'm going to discuss in terms of like what is a sensor, right? So sensors are basically an input device that take readings from your surrounding environment and sends the data to a microprocessor or a computer. So if the data is in analog form, it just converts it into a digital form by with the help of an analog to digital converter. And what is the use of a microprocessor? A microprocessor is referring to as the brain of the computer that is used to process your data and take the necessary actions based on that. So this third area is actuators. So actuators are basically involved whenever there is a degree of movement. That means that if you want to move from if you want to make the movement into your machineries or into your calculation, so you can use an automated system. So this will definitely involve some form of output signals that involve the signals relating to the actuators to control the motors, wheels, solenoids, and so on. So this is the basic concept of an automated system. Basically, an automated system is a combination of your software and hardware, and it has three important areas: sensors, microprocessors, and actuators. Sensors, we know it already as well that they are used to sense your surrounding values, and they are used in other electronics as well. Like you can take the example of the automatic door that is maybe placed in your
shopping malls or something. So whenever as you go there, it is automatically turned on. That is only because of the sensors, because sensors sense the surrounding environment. The microprocessor is basically the brain of your computer or the brain of your machine that helps you process them, that helps you make the decisions. And actuator is basically like the movement mechanism. So if I give you an example in terms of a human, I can say that a human also has sensors. Our sensors includes feeling, touching, listening, hearing, all of them. What is our microprocessor? The microprocessor is our brain, and actuators are going to be our bones, or you can see the joints in our bones that help us to make the movement around us. Sir, when we will do past paper of chapter number 5, I'll just complete chapter number 6 and then we will do it together. Or maybe I can solve one whole paper right in front of you. So this will save our time because we have completed P1. I'll solve one paper and then rest of you guys can continue. So this is the basic concept of your automated systems. Like you have the combination, it's a combination of system and hardware. It is designed to program. So that's it. Now, what is important, the next thing is that you need to learn like what are the advantages and disadvantages of these automated systems. This automated system is used in a variety of ways. Like for example, you have industrial, you have transport, you have agriculture, you have weather, you have gaming, you have lightning, you have science. You have all of these advantages and disadvantages. So can you give me some advantages or disadvantages of an automated system, like in any of the industry that you can see right here? सर Mm-hmm. ऑटोमेटेड सिस्टम्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं छोट Can you speak a little louder as I cannot hear you? could you explain automated systems? You want me to explain automated systems again? Yes. Okay, so automated system is basically a combination of software and hardware. A combination of software and hardware means that they cannot work without the hardware. At the same time, they cannot work without a software as well. So one condition is that they are a combination of software and hardware. The second point is that they are designed to work without human intervention. That means that they do not need any human to process them completely. However, sometimes they require some humans to monitor them. Then the third point is that an automated system always contains three areas. Like the first area that we need is basically the sensors, right? Sensors are used in an automated system. Why they are used? So that they can take your surrounding values and they can generate an output, and these sensors then convert your value into your analog way, so that it's understandable to it. The second area after sensors I have right here is microprocessors. So microprocessors are known as the brain of your computer. That means that they are solely responsible for making the decisions, or they just make sure that if this is the value into a computer system, so they just makes those decisions. Then for the third part, I have the actuators. So actuators are known as the movement mechanism, the movement area into a computer system that helps you move them, like it's like a joint or bones into human body. Like with the help of these bones and joints we are able to move. So any problem in this? No, sir. So after this I was right here that can you give me some advantages and disadvantages of that? Shayan has given me some examples. Like he says that it's expensive to set up initially. Yeah, okay. One disadvantage, another thing is that it needs maintenance frequently over time. Yes, it costs a lot to maintain these systems. And can you also give me some advantages as well? What do you say, Ryan?
Advantages, save money. Okay, perfect. The advantages and disadvantages, both. Disadvantages are So you're asking for both advantages and disadvantages. okay, okay. So this is basically like I have a number of industries. So, I will not be going each and every industry one by one. I will explain one or two industries, and the rest of that you can even do it at your books as well, because the concept is same. And if I do so, it will take a lot of our time. So in this example, I have the first example right here. Now, I'm just giving you the basic concept that this is basically an example of a nuclear power station. So it says that in an automated system, we have the controlling and monitoring function of a nuclear power station. So since automation gives you an increased safety in both the process itself, so you can see that right here, it says that it's a distributed control system. Now on the right hand side, you can see that you have the number of sensors. This is temperature sensor, pressure sensor, flow sensor, gas level sensor, radiation sensor. Now these sensors are placed in different areas, and the values from these sensors are then sent to your distributed control system DCS. Now this DCS is being controlled and supervised or monitored by your supervisor. Now this system is also connected with the actuators. The actuators are used to control your mechanism or controlling your movement, and with the help of this actuator, you can shut down your system. With the help of this actuator, you can turn on water pumps, you can turn on the valves as well. With the help of this actuator, you can turn on and off your gas pumps or valves as well. So the point is that if you have a one supervisor right here, so this supervisor is not like he does not need to go on to right here if he wants to take the values. He even do not want to go right here and here to check the values or turn on or off the water pumps or gas pumps by himself, because all of this is basically an example of an automated system. You can see that all of them right here is connected with each other. Each and everything is connected, and I have one supervisor sitting at one place. That means that if he even wants to turn the gas pumps off, he don't need to go here and do it manually. If he wants to check the value for all of them, he can see all of them into a distributed control system. So are you getting the point? Do you have any problems? सर क्लियर? सर इसके क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं पेपर में? इसके क्वेश्चंस आपके पास आएंगे कि ऑटोमेटेड सिस्टम के एडवांटेजेस बताओ और डिसएडवांटेजेस बताओ, और वो आपके पास ये रहे। एडवांटेजेस ये रहे कि इट्स मच फास्टर देन अ ह्यूमन ऑपरेटर टू टेक एक्शन। इट इज मच सेफर। द प्रोसेस इज मोस्टली लाइकली टू रन इन ऑप्टिमम कंडीशंस। कम से कम कंडीशंस में चल जाता है। आप 24 आवर से ज़्यादा भी इसको चला सकते हो। डिसएडवांटेजेस क्या है? इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू सेटअप। इट्स ऑलवेज पॉसिबल टू सेटअप फॉर अ कंडीशन टू अकर। आई मीन टू से दैट समटाइम्स कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है जो कंप्यूटर खुद कॉपरेट नहीं कर सकता, सो दे नीड अ सुपरवाइजर। साइबर अटैक हो सकते हैं। इसके क्वेश्चंस आपके पास इसी तरह से आते हैं कि एक ऑटोमेटेड सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले यू आर गोइंग टू रिप्लाई एन ऑटोमेटेड सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर डिजाइन टू कंप्लीट अ ह्यूमन टास्क विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। पेपर में आ सकता है व्हाई देयर इज अ नीड फॉर सेंसर्स, व्हाट इज एक्चुएटर्स, व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर। राइट डाउन 2 or 3 advantages or disadvantages of an automated system into any industry. So the point is that you don't need to go through every industry. The points are same for everyone. क्योंकि जो the points that are right here, they are same in this example as well, that I'll show you right now. But till here, do you have any problems? No, sir. सर Mm-hmm. सर कभी भी हमें ये ऐसी कोई टाइप की एग्जांपल डिजाइन करने के लिए बोल सकते हैं? अगर डिफाइन करने के लिए भी बोलेंगे तो आपने इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, दैट्स इट, कुछ भी याद नहीं करना। और जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी समझाया है कि राइट साइड के ऊपर सारे सेंसर्स अलाइन है, वो सारा डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम को देते हैं। डीसीएस के साथ एक्चुएटर्स कनेक्टेड है जो इन सारी वैल्यूज को कंट्रोल कर रहे हैं, और एंड पे एक सुपरवाइजर है जो उनको मॉनिटर कर रहा है। तो ऑटोमेटेड सिस्टम के अंदर द सुपरवाइजर डू नॉट हैव टू गो ऑन टू एवरी पार्ट टू चेक द वैल्यू और टू ऑपरेट दैम मैनुअली। He can just operate them by sitting at one place. So this is an automated system that it has sensors, it has microprocessors, and it has actuators connected. तो सर इधर माइक्रो प्रोसेसर का क्या काम चल रहा है?
माइक्रो प्रोसेसर का काम ये है कि सबसे पहले वाटर पंप आपको जो है वो वैल्यू देगा कि आपके सिस्टम के अंदर वाटर का लेवल कितना है। आपकी गैस के अंदर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हीलियम, जो भी आपकी गैसेज हैं उसका लेवल क्या है। अब एक सुपरवाइजर इस काम पे तो नहीं बैठा रहेगा ना कि पहले वाटर पंप पे जाए, उसका लेवल चेक करे, फिर गैस पंप पे जाए। और ऐसा ना हो कि अगर वो वाटर पंप पे जा रहा है तो जब जितना टाइम वाटर पंप पे लगा रहा है उतनी देर में गैस पंप से जो है वो कोई इस तरीके की चीज हो जाए। तो इस ये सेंसर से कुछ खास वैल्यू सेट करेगा। मतलब कि ये कह लो कि अगर 50% मैं कहूँ कि मुझे वाटर का लेवल चाहिए और 50% मुझे गैस पंप चाहिए, और अगर एक ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं हो, मैं वाटर पंप की तरफ जाऊँ 50% चेक करने के लिए और मीन वाइल गैस पंप जो है 50% से एक्सीड हो जाए तो वह एक्सप्लोड हो जाएगा। लेकिन इसका सॉल्यूशन ये होता है कि जब मैंने सेंसर सेट कर दिए और जब वो रीडिंग उस रीडिंग पे वो आ गया, 50% पे वाटर आ गई, 50% पे आपकी गैस आ गई, तो जब ये सेंसर माइक्रो प्रोसेसर को अलर्ट करेगा कि ये वैल्यूज हमारे पास हो गई हैं, तो फिर माइक्रो प्रोसेसर जो है वो एक्चुएटर को कमांड देगा कि अब आप इसको क्लोज कर दो। और ये सारा काम जो है सुपरवाइजर एक जगह पे बैठा हुआ देख रहा होगा। तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर का काम ये है कि इट्स लाइक मेंटेनिंग द होल सिस्टम, कि कोई भी वैल्यू जो मैंने सेट की हुई है वो उससे ज्यादा वैल्यू नहीं जाए। तो सर हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि जो सेंसर से हमें वैल्यू दी हुई है वो माइक्रो प्रोसेसर उसको प्रोसेस करेगा और फिर एज एन आउटपुट एक्चुएटर वो एक्शन परफॉर्म करेंगे। सेंसर को भी वैल्यू आप दोगे, जो वैल्यू आप सेट करोगे सेंसर वही काम करेगा। और अगर वो वैल्यू एक्सीड हो गई तो माइक्रो प्रोसेसर काम करेगा। जी नहीं नहीं, माइक्रो प्रोसेसर तो काम कर ही रहा है ना, वैल्यू चाहे एक्सीड हो या नॉर्मल में हो। इट्स लाइक अ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम दैट इज वर्किंग 24 hours। मतलब यू नेवर नो, मे बी इट हैज देयर इज एन एक्सीडेंट और समथिंग, और मे बी देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ डिसरप्शन। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि वैल्यू अगर उस लेवल को पास हुई तो वो सिस्टम जो है वो काम करेगा। सिस्टम तो काम कर रहा है, वो मेक श्योर कर रहा है, वो उसको रेगुलेट कर रहा है। जी ठीक है सर। अच्छा, अब इसकी जो किताबी डेफिनेशन है वो भी बता देता हूँ। डेटा फ्रॉम अ नंबर ऑफ सेंसर्स इज सेंड टू द कंप्यूटर सिस्टम, जिसको हम डीसीएस कह रहे हैं। अगर डेटा एनालॉग के अंदर है तो उसको डिजिटल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। डीसीएस के पास सारा एक्सेस है डेटाबेस का, ऑपरेशनल डेटा का और पैरामीटर्स का। मकसद ये कि जिस काम को जिस तरह से करना है उसकी जो वैल्यूज हैं वो सारी वहाँ पे मौजूद है। सो एनी एक्शन इफ नीड्स टू बी टेकन, द सिग्नल्स विल बी सेंड टू द अप्रोप्रिएट एक्चुएटर टू अप्रोप्रिएट पंप or to run an emergency shutdown. So the key here is the system is fully automated. The system is fully automated. The supervisor will sit in a remote control room, and there will be a large screen. And while the process is fully automatic, the supervisor will be watching of this. But just in case if the supervisor thinks that this is not appropriate, so still he can override the system. ओवरराइड मीन्स के सिस्टम को वो अपनी कमांड दे सकता है कि यार ठीक है, आई नो इट्स नॉर्मल बट आई वांट टू शट इट डाउन, सो यू हैव टू डू इट लाइक दिस। सर सेंसर्स की वैल्यू सुपरवाइजर सेट करेगा। बिल्कुल, सुपरवाइजर ओ, सेट करेगा। ठीक है सर। केमिस्ट्री पढ़ी है आपने? जी सर। केमिस्ट्री में वो ब्यूरेट से कुछ केमिकल्स शायद वो गिरते हैं तो हम उसका लेवल सेट करते हैं ऊपर के, हमें सिर्फ इतने मिलीलीटर केमिकल चाहिए जब वो ऊपर से गिर रहा होता है, यू रिमेम्बर? जी जी सर। तो उसमें क्या होता है कि अगर एक सर्टेन लेवल पे लिक्विड आता है तो उसका स्क्रू हम टाइट करते हैं, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं उस एपरेटस को, लेकिन वो ह्यूमनली पॉसिबल होता है। अब कभी कभार ऐसा होता है कि ह्यूमन रिएक्शन टाइम की वजह से शायद एक या दो ड्रॉप्स उसमें ज़्यादा गिर जाएं। मैं नहीं चाहता था कि इतने ज़्यादा गिरें ड्यू टू ह्यूमन रिएक्शन टाइम और एनी अदर प्रॉब्लम। लेकिन ऑटोमेटेड सिस्टम में क्या होगा कि अगर आपने उसको सिस्टम दे दिया, उसको इंस्ट्रक्शन दे दी कि आई नीड इट फॉर लाइक 4 और 5 ml ओनली, दैट्स इट, तो वो जैसे ही 4 ml पे पहुंचेगा वहीं उसको रोक देगा। क्योंकि अगर इसकी जी जगह ह्यूमन हो तो ह्यूमन को तो उसको देखना पड़ेगा ना यार, कब होगा कब होगा कब होगा, क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। तो दिस इज एन ऑटोमेटेड सिस्टम दैट यू कैन जस्ट कन्वर्ट दैम इजीली। अब बताओ आपको इसमें प्रॉब्लम? नहीं सर। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो इसी तरह से आएंगे आपके पास। कोई किसी भी एक प्रोसेस को आपने समझा देना है, लेकिन सारे प्रोसेस याद नहीं करने हैं, सिर्फ कोई एक अच्छे से समझ लो, क्योंकि वही जो है वो प्रोसेस सारे चलेंगे। एडवांटेज या डिसएडवांटेजेस आ सकते हैं। ये आ सकता है कि वाई देयर इज अ नीड फॉर सेंसर्स, वाई देयर इज अ नीड फॉर माइक्रो प्रोसेसर्स, एक्चुएटर का क्या काम होता है, लाइक दिस। बाकी
apart from that, when we will be solving the past paper, so you will get to know it. सर हमें कोई सिनेरियो देके कभी ये कह सकते हैं कि इसका आप एक डायग्राम फेच करो। डायग्राम इसकी नहीं आती। ओके सर। डायग्राम एज पर द ट्रेंड चैप्टर 5 की डायग्राम आती है, वो मैं पास पेपर कराऊंगा तो कराऊंगा। चैप्टर 5 में फिशिंग है, फार्मिंग है, डॉस अटैक है, डीएनएस है, उसकी डायग्राम्स पास पेपर के ट्रेंड में देखी गई हैं रिसेंट ईयर्स में। लेकिन ऑटोमेटेड सिस्टम की डायग्राम अभी तक मैंने देखी नहीं, बट स्टिल आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। But still, I think that if you know the concept and they give you a scenario, so it's really easy to create a diagram. You just need to show them the sensors, you need to show them the actuators, you need to show them that all of your components are connected with an actuator and then with a centralized system. And the centralized system is connected with a supervisor. So I'm expecting that even if there is a diagram, you can create it easily. जी सर। अब यहाँ देखो, ये सेकंड एग्जांपल है। अब इवन बिफोर आई टेल यू, कैन यू टेल मी द प्रोसेस ऑफ इट? कैन यू टेल मी द प्रोसेस दैट इज हैपनिंग हियर? रयान, कैन यू स्पीक अप? और मे बी शयान, आई डोंट थिंक सो रयान कैन स्पीक अप। सर सबसे पहली चीज़ तो ये दोनों प्रोसेस मॉनिटरिंग स्टेशन से मॉनिटर हो रहे हैं। हम्म। हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो डेटाबेस एक्सेस कर सकता है। हम्म। और सर मुझे प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 का सही से समझ नहीं आ रहा। नो प्रॉब्लम। प्रोसेस 1 है, एक प्रोसेस 2 है। आपके पास दोनों जो है वो मैन्युफैक्चर ऑफ पैरासीटामोल है, मींस मैन्युफैक्चर ऑफ द पैरापेनाडोल। हियर यू कैन सी दैट दिस वन, ये जो ब्लू कलर है इसका मतलब है कि ये एक्चुएटर है, और ये जो ग्रीन कलर है इसका मतलब है ये सेंसर है। ये किससे कनेक्ट है? आपके इंटरफेस से। इंटरफेस किससे कनेक्टेड है? आपके कंप्यूटर सिस्टम से। कंप्यूटर सिस्टम किससे कनेक्ट है? आपकी डेटाबेस से और आपकी मॉनिटरिंग स्टेशन से। यहाँ पे आपका सुपरवाइजर बैठेगा और वो चेक करेगा मॉनिटरिंग स्टेशन से। अब इसमें हो क्या रहा है? इसमें सिर्फ ये हो रहा है कि आपका जो पूरा सिस्टम है वो आपकी सेंसर्स पे डिपेंडेंट है, आपके कंप्यूटर पर और आपके एक्चुएटर पे। प्रोसेस 1 इज द मैन्युफैक्चर ऑफ द पैरासीटामोल, प्रोसेस 2 इज द मेकिंग ऑफ द सॉलिड टैबलेट्स। दोनों प्रोसेसेस आपके मॉनिटर हो रहे हैं सेंसर से। कंप्यूटर जो है वो डेटाबेस से कंसल्ट कर रहा है कि जो वैल्यूज हैं, जो पैरामीटर्स हैं, वो करेक्ट हैं या नहीं। अगर पैरामीटर्स करेक्ट हैं, सो द प्रोडक्शन इज गुड। बट जस्ट इन केस इफ देयर इज एनी नेसेसरी एक्शन दैट नीड्स टू बी टेकन अप, so it changes. So any necessary action means heating up, stirring up. So this is also, this system is also completely automated. इसमें कोई, इस सिस्टम के प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। अब इसके जो एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं वो सेम है, यहाँ देख लो जो अभी ऊपर मैंने बताया। फास्टर है, सेफर है, हायर प्रोडक्टिविटी है, हायर कंसिस्टेंट रिजल्ट हैं, लॉन्गर रन में कम एक्सपेंसिव है, इट कैन वर्क 24 आवर्स। डिसएडवांटेज, एक्सपेंसिव टू सेटअप, ऑलवेज पॉसिबल फॉर अ सेट ऑफ कंडीशन टू, अगर टेस्टिंग की जरूरत है। ऑटोमेटेड सिस्टम नीड एनहांस मेंटेनेंस, कंप्यूटर सिस्टम कैन बी सब्जेक्ट टू साइबर अटैक्स। इज इट सेम? जी सर। Now, here is another example for the transport industry. Now, in the transport industry, you have your autonomous cars that are parked with the help of your sensors. Like you have sensors available on
the front and the back and the right and left of your car. So your sensor measures the value all around the places and park the car. So self-parking cars are an example of that. Then here are the advantages and disadvantages. Like if you use sensors, so it can allow the same number of cars to use fewer parking space because human make mistakes, but machines cannot. It avoid traffic disruptions. Car can fit into small places because they will take precise measurement. There will be fewer dents and scratches. It's a safer system. It has a very consistent result. But disadvantage is that over reliance on this system will make us a loss of skill, such as there will not be drivers in the industry, there will be loss of a skill. If there is a fault or this dirty sensor, or if the camera just detect false image, so it can lead to malfunction. Curbing of vehicle is a common problem because sensors may not pick up the curbs. It's an expensive option. It requires additional maintenance as well. Any problem in this part? सर पहला एडवांटेज समझा सकते हैं? पहला एडवांटेज में यह है कि अगर इंसान गाड़ी लगाते हैं तो वो जाहिलों की तरह लगाते हैं। एक जगह लगाने की होती है, वो दो जगह जो है वो कवर कर लेते हैं। मतलब सीधी गाड़ी लगानी होती है, वो उसको बिल्कुल कैसे मैं बताऊं, वो लैंडस्केप में लगा देते हैं दोनों दो गाड़ियों की जगह पर। लेकिन अगर मशीन होगी तो वो समझदार होते हैं, इंसान नहीं होते, तो वो बहुत तमीज से और तरीके से गाड़ी को पार करेंगे कि किसी और की गाड़ी को नुकसान ना हो। ये देखो, इसकी बात कर रहा था मैं, मिल गई मुझे तस्वीर। ये गाड़ियां ऐसे लगती हैं, कुछ लोग ये लगाते हैं ऐसे। अब इसने क्या किया, इसकी जगह भी ले ली, इसकी जगह भी ले ली। तो ठीक डू है यू गॉट माई पॉइंट? जी सर। और कुछ तो ये यही रोड पे लगा के चले जाते हैं, एज इफ यू नो इनके अब्बा का रोड है ये। सर इसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर यूज होगा ना? जी जी जी। प्रॉक्सिमिटी सेंसर यूज होता है जो चारों तरफ से उसको वो करता है, चेक करता है। एक वीडियो भी थी मेरे पास, दिखाता हूँ। ये रहा। That's it. This is an example of an auto parking sensor, as you can see. But for an auto parking sensor, you need an expensive car, maybe a BMW or something like this, as I explained to you. सर इसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर के अलावा कौन सा सेंसर यूज हो सकता है?
प्रॉक्सिमिटी के अलावा इंफ्रारेड यूज हो सकता है, और आई थिंक एक्सेलेरोमीटर भी यूज हो सकता है। प्रॉक्सिमिटी तो है ही है। लेवल सेंसर भी यूज हो सकता है। लेवल सेंसर यूज टू मॉनिटर द लेवल्स इन अ पेट्रोल टैंक इन अ कार। एक्सेलेरोमीटर उसकी एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन के लिए यूज हो सकता है। प्रॉक्सिमिटी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज हो सकता है। इंफ्रारेड टर्न ऑन कार विंड स्क्रीन वाइपर्स ऑटोमेटिकली इफ देयर इज अ रेनी सीजन। इसके बाद मेरे पास एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर की भी सेम स्टोरी है। ये इसकी डायग्राम है। सो कैन यू टेल मी किसकी डायग्राम से क्या, अब इसमें क्या हो रहा है? Any guesses, any answers? Now in this diagram, you can have a supervisor. It's connected to internet. Internet is connected to your controllers, which are focused on the automatic weather station. वायरलेस रिसीवर है, वायरलेस ट्रांसमीटर है, और आपके एक्चुएटर्स हैं। ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम है ब्राजील इरिगेशन सिस्टम के अंदर। अब यहाँ पे द कॉन्सेप्ट इज के द वाटरिंग ऑफ इरिगेशन इज फुली ऑटोमेटिक। डेटा फ्रॉम ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन इज रिसीव्ड बाय द कंट्रोलर एवरी 10 मिनट्स। हर 10 मिनट में डाटा रिसीव होता है। Particularly important to predict the weather conditions such as dry or rainy. Water level sensors are used in a crop field to measure the amount of water. If there is less water, it will turn on the actuators to turn on the water pumps. So it's based on the values from the sensor to when to crop them, and like when to water them and when to not water them. It is all maintained by a supervisor. So it basically detects the values and tells your supervisor to water it or not. And again, the advantage and disadvantages are somehow same. Any questions still here? You can review it from your book as well. Then we will be starting from weather stations in our next class. Lightning, science, all of them is same. So that's it for today from my side. 6.1 is AI. Sorry, 6.1 is automated system, 6.2 is robotics, and then 6.3 is robotics. अल्लाह हाफ़िज़ सर। Hafiz, take care.